Hello, dear participants of today's discussion. I, Dr. Abhishek Jaiswal, welcome you in the Hindu editorial analysis of 13th July 2022. Today, we are going to discuss a very sensitive topic, and there are two topics that have been selected. The first one is about the Constitution, its rights, changes, and the real implications of the court and laws. And the second one is on gender issues and the transgender issues and their services in different sections, with the example of the aviation. जो हमारा एविएशन है वहाँ से एग्जाम्पल लेकर के एक एडम हैरी का जो केस है वो उठाया गया है। तो ये दो चीज़ें डिस्कशन में है, इसमें कुछ लॉज हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें काम आएंगे। And if we are preparing for the civil services and the UPSC and other competitive exams, so you are most welcome in today's discussion. Just proceed ahead. So this is the first article that is written on the freedom of the speech, you can say, or it is written on the constitutions and its rights and the sensible act that should be taken under the constitution. And it is written by K Chandru, who was a former judge of the Madras High Court. Madras High Court के एक जज थे, तो he is taking things very logically, or you can say he is taking things very legally. In his discussion, he has systematically raised one of the cases as a case study of LDF government, where Kerala Minister Sajji Sherani is dismissed from his party because he made some remarks on the constitution, and it is considered as कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट। इसको माना जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, और इस वजह से उनको पार्टी से निकाला गया हुआ है। ही गॉट पनिश्ड फ्रॉम द पार्टी एंड दिस केस इज टेकन विद द स्ट्रक्चरल ऑर्डर। इस केस को लेकर के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस अभी तक हुए हैं, जो लॉ और कोड की चीज़ें हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। और पहली बात तो हमें जान लेना चाहिए कि जो ये मिनिस्टर साहब हैं सज्जी शेरन ने क्या बोला हुआ है। ही सिंपली सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटिश क्राफ्टेड एंड एंटी वर्किंग क्लास। दो चीजें बोली हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तो ब्रिटिश क्राफ्टेड है और ये एंटी वर्किंग क्लास है। और जो वर्ड्स हैं लाइक द सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, it is added later. And why this particular thing is said by him, and what are the consequences, and why does he really violated his uh, rule and regulation of the party. So these things are very you can say that sensitive, or you can say that very worthy to know in the reference of the history, in the reference of the current changes that are there in constitution. ये सारी चीज़ें होने के बाद में कि ये किस तरह से ज़रूरी हैं हमारे टाइम के लिए। तो पहली बात जो डिस्कशन में आती है वो ये है कि चंद्रू स्टार्ट्स इज डिस्कशन विद द आर्टिकल 19 ए। व्हाट इज आर्टिकल 19 ए? इट्स इज जैसे कि इनका जो टाइटल है कि अ गारंटर ऑफ फ्री स्पीच। उन्होंने जो गारंटर ऑफ द फ्री स्पीच की बात की, जो फ्री स्पीच बीच में लाते हैं, तो ये जो आर्टिकल 19 फर्स्ट है वो स्पेशली बात ही यही करता है। इट इज टॉकिंग अबाउट द गारंटीज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन विद विच वन कैन इवन क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यानी कि जो आर्टिकल 19 ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार देता है। और इस रेफरेंस में इनका कहना है कि जो बात सजी शेरन ने बोली हुई है उसका एक रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन फैक्ट
डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, जो कि 1935 में आया हुआ था, जो कि इनका रेफरेंस इसी तरह से स्ट्रक्चर जाता है कि इंडियन एक्ट जो 1935 में आया हुआ था, ये 1937 में भले ही इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन कुल मिला के 12 साल तक इसने काम किया। एंड व्हेन India got its own constitution in 1947, and when you see India got its constitutional book in 1950 or the 1949 officially, so it has heavily derived from this government of Indian Act. And the word secularism, जो डेमोक्रेसी की वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे वर्ड सेकुलरिज्म, इट वाज एडेड इन 42nd अमेंडमेंट। और 47th अमेंडमेंट्स आपको पता है कि दिस इज फंडामेंटल अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो यही बात जब बोली एलडीएफ गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने, तो ही गॉट पनिश्ड एंड आल्सो क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। और इसके रेफरेंस में जो ये हमारे फॉर्मर जज हैं कि चंद्रू, ही हैज गिवन few examples that is very prompt. First things he put that Indira Gandhi's case in when she nationalized 14 banks in the case of the privy purses। और ये प्राइवी पर्सेस केस है, आप थोड़ा सा क्या है ये जान लीजिए। एक प्राइवी पर्सेस केस ऐसा है कि जिसमें जो रूलिंग पार्टीज होती थी उसको गवर्नमेंट को कुछ पैसे देने होते थे, कुछ सम पार्ट्स ऑफ द मनी। तो इंदिरा गांधी वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस एंड शी वांटेड टू डिमोलिश इट। ये बात आई तो उसमें जब शी पुट दिस इशू इन लोकसभा, देन इट वाज एक्सेप्टेड, but when it came in the Rajya Sabha, then it was not accepted। तो उस समय क्या हुआ, when there was President PB Gri, what did PB Gri the time, he withdrew the recognition of the rules under the Article 366(20). He withdrew everything, all the rules which the Supreme Court held अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द टाइम। जो रूल को ख़त्म किया गया और इसको अबॉलिश किया गया परवी परसुइस को, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा था कि दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड with the help of this abolishment there was amendment in the constitution, and that amendment is known as 24th and 25th amendment of the time। But it has raised a lot of questions in the court। And if you are well versed with the history of the time, the politics of that time, then you know that P. Ram Murthy, who was the minister in CPI, he said a very harsh word for the constitution. He said that constitution as the representative of the bourgeois landlord state, this is the representation of the landlord's feudal system, this is not the representation of the common man। ये common man का representation नहीं करती है। एंड ये मार्क्सिस्ट जो पार्टी है, यानी कि उस समय की, उनका एक ऐसा रिमार्क सामने आया। जो दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वो 1967 का दिया गया है। एंड 1967 में one of the famous leader who is known with the short name EMS, Nam Budripad, and Nam Budripad is also known as EMS. He has in 1967 said that judiciary system is not greater than the economic system, and this remark was highly criticized in the time। He said, you can see that यहाँ पे सीधे सीधे बोलते हैं कि judiciary cannot rise above the economic system and is always subordinate to it, and it was considered of the time that it is the contempt of the constitution। And the Supreme Court has taken this issue against the EMS, and he said that it looks that he or the EMS has no understanding of the Marxism itself, क्योंकि लगता है कि मार्क्सिज्म खुद नहीं समझ पाते हैं। ही नीड्स टू गो विद दीज थिंग्स बिकॉज मार्क्सिज्म नेवर
subsided judiciary system in the on the basis of the economic growth। तो ये उस समय की चीजें हैं कि लाई गई। एक और उसी एक टाइम पे है जब हिंदी को 1986 में लाया गया, एंड इट वाज imposed according to DMK leaders and के अवजगान जो के अवजगान थे। 9 DM की 9 अदर्स DMK लेजिस्लेटर्स के साथ में उन्होंने क्या किया, इसके सपोर्ट में, इसके विरोध में उन्होंने जो पार्ट 17 है उसको जला दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड से दैट नाउ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, एंड दिस थिंग वाज टेकन वेरी सीरियसली एंड आल्सो पुट इन द कोर्ट, और इसको कोर्ट में लाया गया। और द मद्रास हाई, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रू वाज इन मद्रास हाई कोर्ट, एंड सो ही हैड डिस्कस इन मद्रास हाई कोर्ट द केस केम, एंड देयर वाज अ प्ली दैट देयर दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम देयर लेजिस्लेचर, एंड द चार्ज अगेंस्ट मिस्टर शेरिन, जो ये बात की गई है उसको कंपेयर करते हैं कि ऐसा कुछ था तो इसको कोर्ट में लाने की जरूरत था। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम, एंड व्हेन in 1986 this case came, and then the result was the plea was granted, and everyone was disqualified from the legislative system. Again, he just giving some changes that are there in the constitution in the current time। हमारे current time पे जो कुछ changes हैं उस चीज को इन्होंने रखा हुआ है, जैसे कि he has given one of the example up to 1000 very sensitive केस ऑफ बाबरी मस्जिद केस, जहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बोला था दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट डू एवरीथिंग, वी नीड अ लॉट ऑफ चेंजेस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। he is giving another change in article 35A, that is in current time, 370, that is in current time, and one major change that just happened is 103rd amendments in the constitution that give special rights to the weaker section irrespective of their category like SC, ST and OBC, or sometimes it is especially for the EWS. So there are a lot of changes in the constitution, and everything is under the law and under the rules and regulation. So इस डिस्कशन को क्यों रखा कि चंद्रू ने took it as a case that if there is violation of the party's rules and regulation by Saji Sherin, then he should be dismissed. But there is not such cases, ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ था, then it should be there under the vigilance of the court। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है इसमें बोलते हैं कि फ्री स्पीच की जो बात है, इसमें खास चीज जो हमें देखने वाली है वो हम देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। सबसे पहले तो ये जानना कि एलडीएफ क्या है, तो ये एलडीएफ है द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इज अलायंस ऑफ द लेफ्ट विंग इन केरला। केरला में लेफ्ट विंग का एक अलायंस है। 19 जो आर्टिकल 19 है वो भी हमें समझने की जरूरत है। व्हाट इज आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 is an international human rights organization that works to defend and promote freedom of the expression and a freedom of information worldwide भी है ये। It also founded in 1987 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड व्हाट इज द रियल थिंग बिहाइंड दिस डिस्कशन? इस डिस्कशन के पीछे पूरा पूरा क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दैट वाज इन 1935, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 में आया था, एंड इट केम इन इफेक्ट इन 1937। तो किस तरह से ये चीज़ें हुई, कितने सारे अमेंडमेंट हुए एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया, बट इन द केस ऑफ in Saji Sherai, it was not followed। तो where is the constitution stands? ये एक बहुत अच्छा डिस्कशन है और इसको एक केस और एग्जाम्पल की तरह अपने राइटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि डिस्कशन में बोला भी गया था कि ईएमएस कौन है, जो एलमुकलम, मनक्कल, संकरन, नंबूदरी पद,
ये इनका लाइफ स्पैन है 13 जून 1909 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक, एंड इज पॉपुलरली नोन एज ईएमएस. सो द केस दैट केम थ्रू द ईएमएस, who has said that uh, economic system is above than the justice or the judiciary. तो उस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई हुई थी. और 30 आप आर्टिकल 35 ये तो जानते ही हैं, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर Jammu and Kashmir state legislature that defines permanent residence of the state and provide special rights and privilege to them. ये सारी चीज़ें जो चेंजेस में आई हैं ये करंट इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर for you making you risk when you are writing in mains. Now coming in the next discussion of the next article that is also beautifully designed, and this is goes as ministry takes up transgender pilots case. Who is that ministry, why did it take? तो इसमें खास चीज है इसमें यू नो दैट एविएशन सेक्टर में क्या होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस. जो ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस है वहीं से सारा केस शुरू हुआ. एंड इट केम इन लाइट व्हेन द हिंदू पब्लिश्ड अ न्यूज ऑन 3 जुलाई. जब 3 जुलाई को एक न्यूज आया कि एडम हैरी हु इज अ ट्रांसजेंडर, जो एक ट्रांसजेंडर है 23rd ईयर के हैं, ही वाज सीकिंग कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस को सीख करते थे ऑन द कंडीशन दैट ही स्टॉप हिज हार्मोन थेरेपी ऑफ transition into a male. He is taking a therapy, hormonal therapy, to transition into a male. Male में transition के लिए he is taking a harmony. और जो एविएशन सेक्टर था, जो आपका जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA है, इसने क्या किया कि ही हैज़ पुट कंडीशन दैट ही शुड स्टॉप दैट मेडिकेशन. मेडिकेशन को स्टॉप करना चाहिए. तो things came in light in the government, and you see DGCA was served a notice. एक नोटिस सर्व किया गया यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा. एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैज सर्व्ड a notice to him, to DGCA, that this is the violation of पर्सनल राइट. दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल. ये ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनके राइट्स को वायलेट करता है. एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी. ये भेदभाव पैदा करने वाली चीज़ें हैं. एंड वन शुड नॉट बी given such conditions if he is transgender or she is transgender in commercial pilot license. अब इसमें जब ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई तो इसमें एक सेंसिटिव ऑफिस एक जो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज ऑन ट्रांसजेंडर पीपल, जो आपका ये कैन से नोडल मिनिस्ट्री ये ऑन ट्रांसजेंडर पीपल. तो ये इन्होंने क्या कहा कि DGCA ऑफिशियल्स नीड training session so that they should sensitize, and there should be he refers a training session. It was a criticism in fact on that case. इस पे एक criticism किया गया. and you see नेक्स्ट जो चीज़ें आती हैं वो फिर से हमारी पी सुब्रमण्यम की बात करें, जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया है DGCA क्योंकि उनको कब रिप्लाई दिया जाएगा, बट ही आस्क्ड अ रिप्लाई ऑन दिस पर्टिकुलर केस. अब आगे बढ़ते हैं कि एक एक्ट है, एक्ट ऑफ 2019, which talks about the rights, protection of the rights. And he said in that case, in the protection of the right of a person, DGCA is violating that particular thing, and this is a conflict that of the judgment that was given by Supreme Court. तो ये चीज़ें DGC को बोला गया है. जनरल डायरेक्टर एंड डायरेक्टरेट जनरल DGC अरुण कुमार ने बोला है कि जब भी 11 तारीख को दिया गया तो दे विल रिप्लाई फॉर दैट.
एंड नाउ द स्पेशल प्रोविजन की बात की गई. एक राय दिया, द मिनिस्ट्री हैज आल्सो गिवन a complete guideline that they should create a special provision that how they are going to hire transgender in future, so there should not be any confusion on the basis of the rights and the basis of the conflict that such conflicts are arriving. और एक खास बात बोले गए हैं कि if they are इफ दे आर गोइंग द कमिटी, अगर कोई एक कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात करती है, इफ द कमेटी इज कंप्लीट कमेटी दैट गोइंग टू complete a guideline or draft, there should be the representative from the transgender community itself. ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी एक शख्स उसमें होना चाहिए उस कमेटी में जो इसको काम कर सके. एंड देयर आल्सो नीड्स अ मेडिकल एक्सपर्ट टू सी द केसेस लाइक एडम हैरी. तो ये दो चीजें हैं. और एक बहुत ही फेयर बात बोली है कि जो एविएशन सेक्टर है, इट कैन आल्सो गॉस ऑन द कंडीशन ऑफ एडम हैरी, that how his body function is working if he is under medication like lifelong therapy, or this is such a therapy, how his heart is working, how his breath is working, is he physically fit. The medical checkup, that is like it should be checked by the cardiologist. A cardiologist check करवाना चाहिए. So this is the right thing, that there should be such medical system, but this should not be taken without any medical care and medical certificates that he should stop one of the care. So if he is transgender, then he should stop that particular thing, that hormone therapy. So if somebody is normal and taking some medication, will DGCA ask to stop that? Will DGCA say that you should stop your medication, then I'll give you job? So this is something that is under a way. And one thing, if we take the view of Adam Harry का कहना है कि I want to fly as who I am, because he says that he cannot sacrifice his identity for his प्रोफेशन. उसका जो प्रोफेशन है उसके लिए वो अपनी आइडेंटिटी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है. सो दैट इज ऑल इन द डिस्कशन. दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि अभी इसके पहले हम कुछ दिन पहले ही अभी एक एडिटोरियल जो आया हुआ था जिसमें चपल मेहरा बात करते हैं अबाउट द मेडिकल इशूज ऑफ and psychological state of transgender and like LGBTQIA plus plus. तो वो how can someone consider that how Adam Harry is going through, what is the medical condition, what is the psychological condition of him. So there is also one recommendation that there should be a medical facilities for transgender or LGBTQIA. And now moving ahead to see some important things, that what is union social justice and empowerment ministry. Like R Subramaniam, he is the secretary. And we had discussed this thing that there is the act of 2019. तो ये 2019 का जो एक्ट है राइट्स की बात करता है. You can see it is talking about, as we had mentioned, प्रोटेक्शन ऑफ राइट. जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनके प्रोटेक्शन के राइट्स की बात करता है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ टुडे. एंड दिस इज द आर्टिकल दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द टर्म्स वेयर. एक चीज़ कहना भूल गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द स्क्रिप्चर. इट इज it can be criticized, it should be allowed. It is not the constitution is unlike scriptures allows criticism for itself. ये दोनों चीज़ें, दोनों न्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लीगल हैं, इसलिए इस आर्टिकल के बारे में फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ. सो व्हाट वी हैड डिस्कस्ड in our discussion, first is K. Chandru's article that guarantee of the free speech with the terms of one case taken from the LDF. And next we can see that what is the condition of LGBTQIA. I am hopeful that this discussion is going to help you a lot, dear participants of the discussion. Thank you, and study well and stay well. Stay connected. See you in next discussion. See you in next talk soon.